everyone. Many of us are curious about how we can use an or Android cell phone on laptop और ऑन पीसी। क्या हम अपना एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो हम किस तरह से अपने लैपटॉप या पीसी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन use our Android cell phone on our laptop PC by installing software. So you need to watch the video till the end, and let's start now. Okay, first of all, we need to install the software. Go to the your laptop Chrome browser and type it here, Nox. Nox. You can use Nox, you can use BlueStack और Nox यूज़ कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर है जो कि एंड्रॉयड को आपके लैपटॉप पे यूज़ करने में हेल्प करेगा। या आप BlueStack भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से सॉफ्टवेयर जो you can use them. Okay, so in this video I am going to tell you about the Nox. How can we use Nox on our laptop so that we can use or Android on our laptop. So let's start. This search for Nox. Okay. Here Nox. They have free Android emulator on PC, and I click here. And now from here you can download it. Click on here. Okay. And now it is going to install. I have already installed it. It is about 441 MB. The space requirement जो है इसकी वो 441 MB है। अपना ब्राउज़र सर्च कर लें और अपना फोल्डर भी इसमें मेंशन कर लें कि आपने कहाँ पे इसको लोकेट करना है। Okay, I am cancelling it because I have already installed it. Now I am going to tell you about how we can install it and how can we use it. Okay, so go here. I have already here installed in the program. Okay, so here I have the setup for the Nox, and now I am going to install it. अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको इंस्टॉल किस तरह करना है और फिर इसको यूज़ किस तरह करना है। ओके, सो रन इट एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, I'm going to cancel it because okay, इसको आपने यस करना है। क्लिक here on the yes. Okay, now it is initiating the installation. अभी इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये कुछ देर में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, क्लिक ऑन द इंस्टॉल। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है मेरे पीसी में और आप जो है कि BlueStack एक अदर सॉफ्टवेयर वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे दैट सॉफ्टवेयर इज़ वेरी मच हैवी। वो आपकी बहुत ज़्यादा रैम ले लेता है जिसकी वजह से आपको पीसी जो होता है वो स्लो हो जाता है। सो ड्यू टू दिस much space requirement and of the RAM, your PC gets slowed down, and so it is a better choice for you to use Nox App Player to use your Android on the PC. Okay, now the software is installed. Okay, I am clicking on the start, and then the window will pop up for me of this software. Okay, अभी ये सॉफ्टवेयर मेरा इंस्टॉल होगा और अभी ये ओपन हो रहा है विंडो में। अभी आप इसमें जो अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर जो भी हैं, और आप इसमें व्हाट्सएप वगैरह बाकी सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं।
the Google Play Store login. But I am not doing it now. I will click on the login later. Okay, now this is open. The window is open for our Android. It is same as the Android. You can search for the Play Store for any app, for any gallery. Here different file manager. Your file manager download app. You can app center. From here you can download any app for your cell phone. It is the Google Play. I am not logged in it yet, so it will not be working. Another thing is the setting. You can set up everything here. From here, performance, yeah, your performance requirement. Okay, interface setting and phone model and internet. You can search your phone model and add it here. Also you can clean up the caches so that it will work properly without any letting your PC to slow down. Okay, so save changes, and now and that's all about this one. You can also set up the keys from here to automatically open up any desired window or any desired software. Volume up down buttons and file assistant, and that are all you can set up. It is very easy to so that's all about how we can use our Android cell phone on the laptop. Okay, thank you. Now from here we can close the emulator. Okay.